speak? Yeah, I can. All right, Bismillahirrahmanirrahim. So let's start where we left off from yesterday. तो कल हमने कुल डेफिनेशंस के बारे में बात की थी एंड मायोसिस के प्रोसेस को पूरा कंप्लीट किया था। अच्छा, कौन सी डेफिनेशंस की बात की थी? जीन की, एलील, जीनोटाइप, फिनोटाइप, होमोजाइग सॉरी डोमिनेंट एंड रिसेसिव। सो लेट मी जस्ट टिक एवरीथिंग व्हिच वी रेड। जीन, एलील, जीनोटाइप, फिनोटाइप, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो जैसे जो रिवीजन, जीन वो सेक्शन था डीएनए का जो कि कोड करता था एक प्रोटीन के लिए, और वो प्रोटीन एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता था। एक एलील इसी जीन का एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म होता था जो कि सेम जीन लोकाई ऑक्यूपाई करता था, और वन फॉर्म कोई और फॉर्म ऑफ द सेम कैरेक्टरिस्टिक कंट्रोल करता था। जीनोटाइप इन सारे एलील्स की एक कॉम्बिनेशन थी एक ऑर्गेनिज्म में, ऑब्वियसली अफेक्टिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। सो फॉर एग्जांपल, if in an organism, let's say in a cat के cells में you have this pair of homologous chromosomes, जहाँ पे एक क्रोमोसोम के ऊपर you have the capital A वाली जीन, एक क्रोमोसोम के ऊपर you have the small a वाली जीन। Now notice both of these genes जो मैंने लाइन से रिप्रेजेंट की हुए, they are at the same exact location और same exact loci। once you see कि ये same loci पे, that's when you can prove कि अच्छा these two are alleles of the same characteristic, which is fur color, let's say for example. So if the question asks what is genotype for fur color, so you will say capital A and small a. phenotype क्या था? Observable features एक organism की जो कि genotype and environment पे depend करता था। अच्छा, कल की दो बहुत जरूरी चीजें, डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील वो एलील होता था जो कि हम कैपिटल फॉर्म में लिखते हैं, एंड ये एलील हमेशा एक्सप्रेस होता है प्रोवाइडेड कि इट इज प्रेजेंट इन द जीनोटाइप। इफ इट इज नॉट प्रेजेंट, फिर क्या होगा? फिर रिसेसिव एलील एक्सप्रेस होगा। दिस इज द एलील व्हिच यू राइट इन द शॉर्ट फॉर्म, मतलब नॉट इन अ कैपिटल फॉर्म, एंड दिस इज एक्सप्रेस्ड व्हेन द डोमिनेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द जीनोटाइप। ओके, अब हमने कुछ जीनोटाइप्स एग्जांपल्स किए थे राइट हियर, और हमने ये कहा था कि इन जीनोटाइप्स, ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशन है एलील्स की, इनके अलग अलग नाम है। नाउ इफ यू हैव अ कैपिटल, मतलब यू हैव अ डोमिनेंट एंड यू हैव अ रिसेसिव, दिस इज कॉल्ड हेटेरोजाइगोसिटी। हेटेरोजाइगोसिटी। Now, I'm going to explain this in a second, but let's just write the names for these two genotypes. If you have the same allele, मतलब यहाँ पे let's say if you have the capital and the capital, so यहाँ पे ये same allele है, और if you have the same allele as in small a and then small a, दोनों cases में this is called homozygosity. This is also called homozygosity. Now, I assume in school you would have learned this as homozygous and heterozygous, isn't it? In school you would have learned this as heterozygous, right, instead of heterozygosity. Yeah. Yes, तो अभी हम उसी की डेफिनेशन करने वाले हैं, एंड देन आई एम गोइंग टू रिलेट होमोजाइगस एंड होमोजाइगोसिटी, हेटेरोजाइगस एंड हेटेरोजाइगोसिटी। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशंस देखते हैं फॉर होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस, द वर्ड होमो का मतलब होता है सेम। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि उस मिक्सचर में सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया सॉल्वेंट में, इट्स अ क्लियर सोल्यूशन, इट्स होमो, इट्स द सेम सोल्यूशन एट एवरी सिंगल पॉइंट। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड उसमें यू डिसॉल्व सम सॉल्ट, every section of the container, does it look the same? Every section of the glass which has now salt and water dissolved. Could you repeat the question? Yeah, if you have, let's say, a glass of water, and मतलब इस glass में पानी है, and you put some salt in it, obviously the salt is going to get dissolved in the water. After dissolving, after mixing, does every layer of the water look the same? Yeah. It does, which means okay, the salt has completely dissolved in the water. Now compare this to if you have a glass of water और उसमें you put some sand. Doesn't the sand deposit to the bottom of the glass? Because Yeah, it sand is not does. soluble in water, right? It does. इसका मतलब ये है कि now if you look at the bottom layer, all you will see is sand. If you look at the top layer, all you will see is water. Now you see there is a difference between the top layer and the bottom layer. इस केस में इसे कहते हैं heterogeneous mixture. Why is it the
The previous solution called homogeneous. Homo का मतलब होता है same. Every layer, every part of that glass looks the exact same because of the word homo. तो इसीलिए homozygous का मतलब होता है again same alleles in the genotype. So if you have a genotype for any particular characteristic and it has the same alleles, तो उसे हम homozygous कहेंगे. For example, capital, capital, small, small. इस केस में you have two कौन से alleles? Is it dominant or two recessive? ये जो is this Homozygous? dominant? It's dominant, like, yeah. इट्स डोमिनेंट बिल्कुल दोनों केसेस में सेम एलील्स हैं लेकिन फिर इनके अलग अलग नाम क्यों है क्योंकि पहले वाले जीनोटाइप में व्हाई इज इट होमोजाइगस बिकॉज इट हैज टू डोमिनेंट एलील्स इसी वजह से इसका नाम बन जाता है होमोजाइगस डोमिनेंट अब अगर हम दूसरे वाले में देखें ये भी होमोजाइगस है लेकिन ये होमोजाइगस क्यों है क्योंकि इट इज मेड ऑफ टू एलील्स एंड बोथ ऑफ देम आर रिसेसिव तो इस केस में इसका नाम है होमोजाइगस recessive. Now, let's look at what heterozygous is. Hetero or heterozygous, hetero का मतलब होता है different. So when we say heterozygous, इसका मतलब होता है कि you have different alleles that are present in the genotype, obviously जो कि एक particular characteristic को affect करता है. So different alleles present in the genotype. Let's say I have a dominant allele and a recessive allele. अब ये दोनों एलीज तो अलग अलग है एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है इट्स नॉट द सेम तो मैं इसको होमोजाइगस नहीं कह सकता आई विल कॉल इट हेट्रोजाइगस अब देयर इज नथिंग एज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस रिसेसिव वो एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज इफ यू हैव टू एलील्स you are going to have two homozygous and you are only going to have one heterozygous. Can I make any other heterozygous genotype apart from this? No. No, you could say कि what if we write the small letter first and the capital later? Well, we can't do that क्योंकि जब भी हम जीनोटाइप लिखते हैं जैसे कि हमने कल देखा था we write the capital letter first and the small letter after that. So this is the only form, this is the only heterozygous form which you will find the genotype to be in if the characteristic is made up of two alleles, if the characteristic is controlled by two alleles. ओके तो हमने बात की हेटेरोजाइगस के बारे में और होमोजाइगस के बारे में नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज अ हेटेरोजाइगोट नाउ सी इंस्टेड ऑफ ओ यू एस मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ओ टी ई का हेटेरोजाइगोट व्हाट्स अ हेटेरोजाइगोट हेटेरोजाइगोट उस इंडिविजुअल को कहते हैं उस एनिमल को कहते हैं जिसके होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में different alleles on the same gene loci. Let me write the whole thing down. Heterozygote, this is the name given to the individual whose body cells contain the nucleus and the nucleus contains the pair of homologous chromosomes और इस pair of homologous chromosomes में on the same gene loci we find different alleles. अगर मैं इस पूरी डेफिनेशन को शॉर्टन कर दूं इजी वर्ड्स में बताऊं हेट्रोजाइगोट इज द नेम गिवन टू एन इंडिविजुअल व्हिच जिसके सेल्स में हेट्रोजाइगस वाला जीनोटाइप होता है सिंपल एज दैट मतलब कि लेट्स से इफ यू हैव अ पर्सन कॉल्ड पर्सन ए उस पर्सन ए के सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स में ऑन द सेम जीन लोकाई हमारे पास डिफरेंट एलील्स हैं लेट्स से कैपिटल बी स्मॉल बी if this is the combination of alleles if this is the genotype in person A cells तो फिर you will call person A a heterozygote अगर let's say there is a person called person B
उसके सेल्स में द जीनोटाइप इज कैपिटल बी, कैपिटल बी. व्हाट वुड यू कॉल पर्सन बी? Would you call them a heterozygote or you'll be calling them Homozygote? homo? Homozygote. You will call them a homozygote क्योंकि homozygote उस इंडिविजुअल का नाम होता है जिसके बॉडी सेल्स के न्यू आई एम जस्ट जूमिंग डाउन तो बॉडी सेल्स के न्यूक्लियस की होमोलोगस क्रोमोसोम्स में दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट यू जस्ट हैव टू नो कि होमोजाइगोट उस बंदे को कहते हैं जिसके सेम जीन लोकाई पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर में यू फाइंड द सेम एलील्स. कहने का मकसद है द जीनोटाइप का कॉम्बिनेशन विच दे हैव इज द सेम एलील्स एवरी सिंगल टाइम इन एवरी सिंगल सेल. तो ये थी चार डेफिनेशंस हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगोट एंड होमोजाइगोट. Now we're left with one more definition, or you could say one more word, and that is heterozygosity. अब ये क्या होता है? This is also in your syllabus. Heterozygosity कोई नई चीज नहीं है. You will say कि heterozygosity is the property of a heterozygote. कोई भी हेट्रोजाइगोट जो होता है वो हेट्रोजाइगोसिटी शो करता है. हेट्रोजाइगोसिटी शो करने का मतलब कि उनके अंदर जो जीनोटाइप का कॉम्बिनेशन है दैट इज हेट्रोजाइगस. एवरी होमोजाइगोट शोज होमोजाइगोसिटी. होमोजाइगोसिटी क्या होता है कि उनके अंदर जो जीनोटाइप का कॉम्बिनेशन है दैट इज सेम और डिफरेंट एलील्स. कौन सा? इज इट सेम एलील्स और डिफरेंट एलील्स? एक Different होमोजाइगोट है. alleles? होमोजाइगोट रिमेंबर होमो का Oh, मतलब yeah, सेम. so same. Same. So there are three words that you have to do. So first, let me write the definition here. Heterozygosity के लिए. This is the feature of heterozygotes. And vice versa, homozygosity is the feature of homozygotes. So there are three words that you have to remember. Either heterozygous, then heterozygote, and then heterozygosity, or homozygous, homozygote, and homozygosity. ये तीनों वर्ड्स सेम कैटेगरी में आते हैं सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट चीजों को एक्सप्लेन करते हैं. सो फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बोथ ऑफ दीज आर द सेम थिंग लेकिन रेजिस्टेंस हम उस क्वांटिटी को कहते हैं और रेजिस्टिविटी हम उस प्रॉपर्टी को कहते हैं विच इज ऑफ रेजिस्टेंस. सेम चीज यहाँ पे हेट्रोजाइगस बंदे में सॉरी हेट्रोजाइगोट बंदे में हेट्रोजाइगस जीनोटाइप होगा एंड मीनिंग इट विल शो हेट्रोजाइगोसिटी. होमोजाइगोट में होमोजाइगस जीनोटाइप होगा which means it will show homozygosity. Simple as that. Any questions इसके लिए? No, it's clear. Okay, now let's start with an easy question. Let's say I have a gene और ये जो जीन है ये कंट्रोल करता है. I have a gene that controls flower color कि एक प्लांट में फ्लावर का कलर क्या होगा. ये जो जीन है दिस जीन हैज टू एलील्स. एक एलील इज कैपिटल बी and एक allele is small b. So obviously the capital जो b है this is the dominant allele and small b is recessive allele. Now if I tell you कि उस plant में जो genotype होता है वो होता है capital B small b. If that is the case, if you get a heterozygous genotype तो उसमें the phenotype you get is blue. Now, if you have capital B, then the phenotype, sorry, you get is blue. If you have small b, the phenotype you get is red. Now, my question to you is, could you tell me what is the dominant trait? The capital B, so like blue. Blue, बिल्कुल सही. This is one of the main questions before, one of the main basic questions I would say. They simply give you a situation कि कोई जीन है एक रैंडम कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करती है. इन आवर केस वाज फ्लावर कलर. उस जीन के वो बता देंगे कि दो एलील्स है.
This is the dominant, this is the recessive, and then they give you a series of genotypes and the phenotypes for those genotypes. So ये यहाँ पे you have three genotypes and you have three phenotypes. And then they ask you what is the dominant trait or what is the recessive trait. ये तो बहुत सिंपल है. डोमिनेंट ट्रेट का मतलब क्या होता है? वो ट्रेट जो कि डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस करती है. तो इसमें जस्ट लुक फॉर ऐसा जीनोटाइप जहां पे डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस हो रही है. सो यहाँ पे इज द डोमिनेंट एलील बीइंग एक्सप्रेस्ड? Yeah, it is. इट इज. तो अगर डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस होता है तो क्या रिजल्ट आता है हमारे पास? ब्लू का. मतलब कि ये हमारा डोमिनेंट ट्रेट है. नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन. इफ समवन आस्क्स यू कि व्हाट इज द रिसेसिव ट्रेट, यू जस्ट हैव टू लुक फॉर एक ऐसा जीनोटाइप जहां पे रिसेसिव एलील एक्सप्रेस हो रहा हो, मीनिंग होमोजाइगस रिसेसिव. दिस वन. रिसेसिव एलील यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है. अगर एक्सप्रेस हो रहा है तो ट्रेट क्या आता है? रेड का. So your recessive trait is red and your dominant trait is blue. That's pretty much it. So all you have to do is pick up the correct phenotype from the question and write that as the answer. सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ क्वेश्चनिंग ये होता है. अब शुरू होते हैं थोड़े डिफिकल्ट कंसेप्ट्स एंड थोड़े से डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस. बट बिफोर दैट we were left with one definition, I think. Yeah. So let me just tick all of the things we have done. Homozygous, heterozygous, homozygote, heterozygote, homozygosity, heterozygosity. We are left with this right here. Codominance. इसको हम समझेंगे and then we will move on to the next concepts. Now, if I ask you, explain codominance, what would you say? कि codominance का मतलब क्या होता है? मतलब explain it to a 5-year old. Codominance की definition क्या होती है? What does it even mean? It's like basically goes so like when both of the alleles are maybe showing up, like so, like the dominant and recessive allele are like mixed, and then you can see both of the kind on the like phenotype, like you can see the both the characteristics. Hmm. बिल्कुल सही. Perfect. So if you did not know the concept of codominance and I gave you a genotype, for example, capital B small b, you would say कि capital B small b है, this is heterozygous and यहाँ पे dominant allele express होता है. This is true, not in the case of codominance. Codominance is a special type of phenomena जिसमें two different alleles, जो दो अलग अलग alleles होते हैं, they equally contribute to the phenotype in heterozygote. एक heterozygote के अंदर दो different alleles equally contribute करते हैं to the phenotype. Now, let's take an example. If I have a gene that controls the body color for, let's say, a frog, or वो gene that controls body color has two alleles. एक है द कैपिटल बी एलील एंड एक है द स्मॉल बी एलील. दिस कैपिटल बी एलील, दिस इज द डोमिनेंट. दिस इसका डोमिनेंट जो ट्रेट है दैट इज ब्लू, एंड जो रिसेसिव ट्रेट है मतलब जो एक्सप्रेस होता है बाय द रिसेसिव एलील दैट इज रेड. नाउ कुड यू टेल मी कौन से जीनोटाइप्स पॉसिबल हैं? व्हाट आर द ऑल ऑफ द कॉम्बिनेशंस ऑफ द जीनोटाइप्स आई कैन हैव? There's capital B, capital B. There's capital B, small b. There is small b, small b. ओके, बिल्कुल सही. कैपिटल बी, कैपिटल स्मॉल, स्मॉल स्मॉल. स्मॉल स्मॉल को हम कहते हैं होमोजाइगस रिसेसिव. तो यहाँ पे लिख देता हूँ होमोजाइगस रिसेसिव. होमोजाइगस रिसेसिव का मतलब कि एक ऐसा जीनोटाइप व्हिच इज होमोजाइगस मतलब सेम एलील्स हैं, और रिसेसिव का मतलब सेम क्यों एलील्स है? बिकॉज बोथ ऑफ दीज एलील्स आर रिसेसिव. तो यहाँ पे रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस होगा व्हिच इज रेड. अब पहले वाले को देखते हैं. होमोजाइगस डोमिनेंट, एक ऐसा जीनोटाइप which again has the same two alleles and both of these alleles are dominant alleles, तो dominant trait express होगा. यहाँ पे हमें कोडोमिनेंस का इफेक्ट नहीं दिखता है.
कोडोमिनेंस का effect, always remember, you will always see the effect of codominance only in a heterozygote. मतलब कि कोडोमिनेंस का अफेक्ट सिर्फ हमें एक हेट्रोजाइगस जीनोटाइप में मिलेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी। अगर मैं कहता कि कोडोमिनेंस यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, सो यू वुड से दिस इज हेट्रोजाइगस, यू विल सी अ ब्लू कलर। लेकिन वी आर डूइंग कोडोमिनेंस। What is codominance? Both of these alleles are going to equally contribute to the phenotype in this case. मतलब कि blue color भी 50% होगा उस frog की body में, and red color भी 50% होगा उस frog की body में. So you will say this will be a combination of blue and red. Now, अब जो भी color बनता है when you combine the blue and red color, this is the phenotype of this heterozygote right here. Does that make sense? तो यू हैव 50% ऑफ द डोमिनेंट ट्रेट एंड यू हैव 50% ऑफ द रिसेसिव ट्रेट। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, द न्यू कलर, इट्स अ कंप्लीटली न्यू कलर व्हिच इज नॉट ब्लू नॉट रेड, द न्यू कलर व्हिच यू विल हैव विल बी द phenotype of this heterozygous। यहाँ तक क्लियर? Yeah, it's clear. ओके। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अगर हम कोडोमिनेंस के अलावा बात करें, अगर हम कोडोमिनेंस के अलावा बात करें तो दो phenotypes हो सकती हैं, डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट। बट इफ यू लुक एट कोडोमिनेंस, ऐसा नहीं होता कि मोर देन टू phenotypic variations आर पॉसिबल। ब्लू भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इजंट दैट द केस? Yeah. You get more than two phenotypes that are possible. This is another sentence that carries a mark when you define codominance. Okay, codominance के phenomena में more than two phenotypes are possible. और थोड़ा सा अगर इस सेंटेंस को अगर हम कॉम्प्लेक्स करके लिखें तो मोर देन टू phenotypic variations are possible. This is the same thing as writing more than two phenotypes are possible. It's the same thing. Phenotypic variations मतलब what are the different types of phenotypes that you can get. अच्छा, एक और definition भी, एक और sentence भी you can write. अगर हम codominance नहीं देख, Sir, yeah, आपकी आवाज़ कट गई थी like oh, are you able to hear me now? yeah, I can. Okay, so where did my voice cut off? I was just You, wanting to I say. think you just finished the last sentence and then I didn't hear anything. ओके, सो इस सेंटेंस के एंड में मैंने बस ये कहा था कि एक और सेंटेंस भी है जो हम लिख सकते हैं कोडोमिनेंस को डिफाइन करने के लिए। नाउ जस्ट फॉर 1 सेकेंड, इमेजिन कि अगर हम कोडोमिनेंस नहीं देख रहे होते। सो लेट्स गो बैक टू दिस। दिस इज अ रैंडम जीन, एक रैंडम जीनोटाइप की कॉम्बिनेशन। दिस इज नॉट कोडोमिनेंस, राइट? नाउ लुक एट दिस, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेटेरोजाइगस के सेम फिनोटाइप्स है, करेक्ट? Yeah. But now I want you to look at what happens in codominance. Homozygous dominant का जो trait है, which in this case is blue, मतलब phenotype है, and heterozygote का जो phenotype है, both of these are not the same. So this one and this one. अगर कोडोमिनेंस नहीं होता तो ये तो सेम होते। कोडोमिनेंस अगर है तो ये दोनों सेम नहीं है। सॉरी, these two are not the same. So this is one more definition that you can write. Okay, the phenotype of the heterozygote is not equal to the phenotype of the homozygote. And it actually makes sense if you understand what codominance is. पहले heterozygote का मतलब ये था कि dominant allele express हो रहा है। यहाँ पे heterozygote का मतलब ये नहीं है। heterozygous का मतलब यहाँ पे है कि dominant और recessive दोनों express हो रहे हैं। So this is where you're gonna have a third new phenotype. So let me just complete this. Homozygote. अच्छा, इन अ क्वेश्चन व्हेन डू यू नो कि कोडोमिनेंस का कंसेप्ट यूज करना है, व्हेन डू यू नो कि नहीं यूज करना है? द क्वेश्चन इज गोइंग टू टेल यू। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यू विल फाइंड दिस सेंटेंस। कैपिट, जैसे यहाँ पे हमारे पास दो एलिल्स थे ना, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। क्वेश्चन कुछ ऐसे लिख के देगा, कैपिटल बी एंड द स्मॉल बी एलील आर कोडोमिनेंट।
Once you look at this sentence, or once you look at or find the word codominant, दिस मीन्स कि अब कोडोमिनेंस के जो जो कंसेप्ट हमने पढ़े हुए हैं, कि तीन डिफरेंट कंसेप्ट्स पढ़े हुए हैं या तीन सेम कंसेप्ट्स पढ़े हुए हैं, टू डिफरेंट एलील्स इक्वली कंट्रीब्यूट टू द phenotype of a heterozygote, more than two phenotypes are possible, phenotype of heterozygote is not the same as homozygous dominant. ये तीन features you will apply in a question which makes use of this sentence. कोई confusion यहाँ तक? No, it's clear. Okay. अब शुरू करते हैं थोड़े ज़्यादा इंटरेस्टिंग करते दिस वाज ऑल द बोरिंग पार्ट, सिर्फ डेफिनेशंस हम अभी तक कर रहे थे. नाउ वी आर गोना स्टार्ट विद द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इस चैप्टर का. सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज समथिंग कॉल्ड मोनो हाइब्रिड inheritance. Now if I ask you, what does the word mono mean? MONO, this word right here. Single? मोनो का मतलब क्या? सिंगल. वेरी गुड. मोनो का मतलब होता है सिंगल. इसीलिए व्हेन पीपल से दैट यू हैव अ मोनोटोनस टोन, यू नीड टू इम्प्रूव ऑन इट व्हेनेवर समवन इज गिविंग अ प्रेजेंटेशन. मोनोटोनस टोन का मतलब देयर टोन हैज ओनली वन वॉइस. उनकी टोन में कोई इंक्रीज नहीं है, कोई डिक्रीज नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है. दे आर ओनली स्पीकिंग इन वन टोन. सेम केस यहाँ पे. मोनो का मतलब होता है वन. Monohybrid inheritance means the inheritance of one gene. एक जीन की इनहेरिटेंस की बात हो रही है ना. ऑफ कोर्स हमारी बॉडी में 22 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर्स हैं. नाउ इमेजिन 22 पेयर्स. एवरी सिंगल ऑफ दीज पेयर्स, सो फॉर एग्जांपल दिस इज अ होमोलोगस पेयर राइट हियर एंड दिस इज अनदर होमोलोगस पेयर राइट हियर. नाउ ये तो सिर्फ दो पेयर्स हैं. देयर आर 22 पेयर्स लाइक दिस. नाउ इमेजिन इन पेयर्स के ऊपर कितने जीन्स होंगे और कितने एलील्स होंगे, और ये सारे इनहेरिट करेंगे इनके ऑफस्प्रिंग्स. बट ऑल वी आर लुकिंग एट राइट नाउ इज एक जीन की इनहेरिटेंस. अ सिंगल जीन इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग. इस कंसेप्ट को कहते हैं मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस. मोनो का मतलब वन होता है. अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. पहले मैं एक लाइन बना दूं यहाँ पे. ओके. एग्जांपल, we are looking or we're talking about a gene that affects body color. Now I'm going to take this really, really slow. I'm going to talk about a gene that affects body color. इस जीन के दो एलील्स हैं, a capital B allele and a small b allele. कैपिटल बी वाला जो एलील है, दिस इज द डोमिनेंट एलील, और इसका डोमिनेंट ट्रेट ब्लू है. स्मॉल बी एलील इज द रिसेसिव एलील, रिसेसिव ट्रेट इसका रेड है. ये कोडोमिनेंस नहीं है. दिस इज नो नॉट कोडोमिनेंस, राइट? दिस इज जस्ट द बेसिक फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस. नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ मेल पेरेंट यहाँ पे एंड अ फीमेल पेरेंट यहाँ पे. सबसे पहले तो हम इन दोनों पेरेंट्स के जीनोटाइप्स को लिखते हैं. सो इन द क्वेश्चन दैट हैज बीन गिवन टू यू, मेल पेरेंट का जीनोटाइप है कैपिटल बी, और फीमेल पेरेंट का जीनोटाइप है स्मॉल बी. Could you tell me the phenotypes for both of these parents? For the male parent, it's blue, and Mhm. for the female parent, it's red. बिल्कुल. For the male parent it's blue, for the female parent is red. अब हमने, if you go back to the start of the chapter, let me go back to this. हमने क्या बात की थी कि इनहेरिटेंस किस तरीके से होती है? वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज पास्ड डाउनवर्ड्स, व्हिच मींस कि लेट्स से क्रोमोसोम नंबर 1 में यू हैड द कैपिटल बी एलील, क्रोमोसोम नंबर 2 में यू हैड द कैपिटल बी एलील, तभी तो हमारा जीनोटाइप कैपिटल बी बना, राइट? सेम केस फीमेल में स्मॉल बी, तो जीनोटाइप हमारा स्मॉल बी बन गया. नाउ do you think both of the alleles are going to be passed downwards? Yes, if one of these alleles are going to be passed downwards. What do you One think? of these. Bilkul, correct. Only one of the alleles are going to be passed downwards. So either it's going to be this one or this one. Now, does it make a difference मैं कौन सा capital B लेता हूँ? Isn't it just both the same? Yeah, it's the same. It's the same. तो
एवरी सिंगल टाइम आई नो कि मेल पेरेंट में जो गैमीट बनेगा, जो सेक्स सेल बनेगा, इट इज ऑलवेज ऑलवेज गोइंग टू बी कैपिटल बी। क्या कोई और पॉसिबिलिटी है स्मॉल बी गैमीट बनने की, लेट्स से? In the male parent? इन द मेल पेरेंट, या। No. नो राइट, बिल्कुल, क्योंकि ये जीनोटाइप हर सेल पे अप्लाई होता है, इवन दोज जर्म सेल्स जो मायोसिस करके गैमीट्स बनाते हैं। अब मायोसिस है होता क्या एक्चुअली? जस्ट वन सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स और एलील्स बीइंग पास डाउनवर्ड्स। जब वन सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स पास डाउन होगा तो वन सेट ऑफ द एलील्स भी पास डाउन होंगे। सो ईदर यू हैव दिस और दिस पास डाउनवर्ड्स, आइदर केस इज गोइंग टू बी कैपिटल बी। नाउ कुड यू टेल मी द गैमीट फॉर द फीमेल पेरेंट? Small b? बिल्कुल, इट्स गोना बी स्मॉल बी। अब 100% ये हमें कंफर्म है कि मेल पेरेंट का गैमीट कैपिटल बी होने वाला है, और 100% ये कंफर्म है कि फीमेल पेरेंट का गैमीट स्मॉल बी होने वाला है। डज दैट मीन कि देर इज अ 100% पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑफस्प्रिंग जिसका जीनोटाइप कैपिटल बी स्मॉल बी हो? इज दैट द केस? जस्ट कंबाइनिंग द टू गेमीट्स टुगेदर, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। क्या कोई और चांस है कि लेट्स से हम कैपिटल बी बना लें, या स्मॉल बी बना लें? इज देयर एनी चांस लाइक दैट? No. नो, क्योंकि लेट्स से इफ समवन आस्क्ड यू इज देयर अ चांस टू मेक दिस, नो, क्योंकि वी ओनली हैव वन स्मॉल बी एलील, वी डोंट हैव अनदर वन। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग दैट। 100% every single time you're going to make the offspring जिसका genotype capital B small b होगा, so this is a 100% chance of making that, which means कि there is a 100% chance that there is going to be a blue colored offspring, क्योंकि ये तो heterozygous है जहाँ पे dominant allele express होता है, मतलब dominant trait हमें दिखता है blue color, so we know that there is always going to be a blue offspring. अब एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से। Sir, can I या, be back in 2 minutes? I just need to connect my charger. Can you just connect ओके, it? या श्योर श्योर। Thank you. Yeah, I'm back. Thank you. राइट, ओके। नाउ लेट्स डू अनदर एग्जांपल, जैसे कि हमने ये एग्जांपल किया था। सो आई वांट यू टू टेक अ बुक या कोई कॉपी एंड देन डू द एग्जैक्ट सेम थिंग जो मैंने यहाँ पे की है। मतलब आई एम गोना टेल यू द मेल पेरेंट एंड द फीमेल पेरेंट का जीनोटाइप। नाउ यू कैन टेल मी द फिनोटाइप बाय राइटिंग इट डाउन, देन द गैमीट्स कौन से बन सकते हैं, एंड कौन सी ऑफस्प्रिंग बनने के पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी। सो आई एम जस्ट गोना राइट दिस डाउन, मेल पेरेंट, and there you have the female parent। मेल पेरेंट का जीनोटाइप, और लेट्स से मेल पेरेंट का जो या जीनोटाइप इज कैपिटल बी स्मॉल बी, एंड फीमेल पेरेंट का इट्स आल्सो कैपिटल बी स्मॉल बी। सो नाउ आई वांट यू टू टेल द phenotype, फिर उसके बाद व्हाट द गैमीट्स आर गोइंग टू बी, या गैमीट या गैमीट्स, आई डोंट नो हाउ मेनी देयर आर। फिर उसके बाद व्हाट इज गोइंग टू बी द ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप एंड phenotype। So just try it out. Could you share the key again? Yeah. The key as in this? Yeah. Yeah, okay. I'm done. Okay.
So what did you get as the male parent of phenotype first? Okay, so the male parent's phenotype it's the blue color, and for the Okay. female it's the red. Are you sure? This is the female Oh, parent genotype. oh yeah, sorry, it's the blue as well. Sorry. It's blue as well, right? Okay. Now, could you tell me what are the gametes for the male parent? Okay, it's the capital B, and the separate gamete is also the small b. Okay. Same for the female parent. All right. And then the genotypes for the offspring, they are capital A, capital A. There's Capital two A which, or capital B? oh yeah, sorry, capital B, capital B. Actually, I wrote Okay. A, so yeah. Oh, okay, So, okay. and then there's capital B and then small b twice. And then there's small b, small b. Okay. And then could you tell me the phenotypes for these genotypes? Okay, so there's blue for the first one, and then the other two are also blue, and then the last one is red. Okay. So what is the percentage of getting blue and percentage for red? Okay, for the percentage for blue it's 75%, and I think for red it's 25. बिल्कुल सही perfect. So for red it's getting 25. तो हमें यहाँ तक तो पता था कि जीनोटाइप से फिनोटाइप कैसे निकालना। अब थोड़ी-सी इसकी बात कर लेते हैं कि हाउ वुड वी फिगर आउट द गैमेट्स व्हिच यू डिड करेक्टली। बिकॉज़ हमें मेयोसिस का मतलब पता है। मेयोसिस का मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज़ पास्ड डाउनवर्ड्स। अब हमें नहीं पता कि कौन-सा सेट पास डाउन होने वाला है। इट्स गोना बी आइदर द सेट कंटेनिंग कैपिटल वी और द सेट कंटेनिंग स्मॉल वी। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू इन इनहेरिटेंस वाले क्वेश्चंस। लिस्ट डाउन every single possibility you can think of. ऐसे नहीं कि okay I predict कि capital B pass down होगा so I'm just gonna write capital B. No, every single possibility. तो यहाँ पे possibility है कि दो gametes बन सकते हैं, same case यहाँ पे। And now what we're gonna do is write down four possibilities of gametes किस तरीके से join होंगे। Either you have this gamete joining with this, either you have this gamete joining with this with this, or this with this. So let me write down all of the, let me join lines for all of these. Either this is the first one, but okay, one second. This is the first one. This is the second one. This is the third one. Oh, one second. This is the third one. And then this is going to be the fourth one. So there are four possibilities that you actually can have. Is there any need to draw the lines? Not really. If you're able to figure out these four possible genotypes of the offspring, that's pretty much it. फिर इससे हमने फिनोटाइप्स कैसे निकाला क्योंकि हमें पता है कि कौन सा एलील किस जीनोटाइप में एक्सप्रेस होने वाला है एंड देन 3 out of 4 are going to be blue 75%, 1 out of 4 is red so 25%. अब if I try to make lines in order to join the gametes, doesn't it look really messy कि gametes join करने का तरीका थोड़ा सा मुश्किल नहीं है कि it becomes confusing by watching so many lines. Yeah, it does. तो हम एक दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं इफ इट डज नॉट साउंड कंफ्यूजिंग यू कैन बट एक और तरीका भी है टू डू दिस मतलब टू जॉइन द गैमेट्स टुगेदर एंड दैट इज बाय यूजिंग समथिंग कॉल्ड अ पनेट स्क्वायर. Punnett square is not a new concept. This is simply a cleaner way, or you could say a better way of showing the crossing of gametes. कि कौन सा गैमीट किस दूसरे गैमीट दूसरे पेरेंट के साथ क्रॉस करेगा. जस्ट अ क्लीनर और अ बेटर वे ऑफ शोइंग द क्रॉसिंग ऑफ द गैमीट्स we use a Punnett cross. Now the way a Punnett cross works is first you're gonna write here the male gametes. So have you heard of a two-way probability table maths में? No, but I know about the Punnett square because I've been using that. Even in Okay. IGs we learned that. Yeah. Yes. So, acha, so two-way probability table and a Punnett square is exactly the same thing. Two-way probability table होता है कि, for example, let's say you go into a park and you find many trees. Some of these trees are tall, some of these trees are short. Some of the trees have apples growing on them, and some of these have mangoes growing on them. Now, don't you have two factors with the help of which you can separate the trees into two groups? Either the trees are going to be tall and apples, tall and mangoes, short and apples, short and mangoes. There are four probabilities, right? Yeah.
So this is what a two-way probability table looks like. कि यहाँ पे you're gonna write height of tree and यहाँ पे you're gonna write fruit growing on the tree. The same thing we do here. On the in the row we're gonna write male gamete. Here in the form of a column we are going to write the female gamete. One second, the female gametes. तो मेल gametes हमारे पास कैपिटल B हैं and small b हैं. Male gametes भी कैपिटल B हैं and small b हैं. So we just join them together. कि capital B and capital B becomes capital B, capital B small b becomes capital and small. This becomes capital and small. This becomes small and small. That is pretty much it. So here we just write the probabilities at the end. 75% blue, 25% red. Okay, now if I tell you to write the ratio of blue to red, what's the ratio going to be? 3:1. 3:1. बिल्कुल सही. For every three offsprings that are blue, there is a possibility or a probability of getting one offspring that is red. इसे कहते हैं ratio. So this is what a Punnett square looks like. अब हम एक ऐसा एग्जांपल करते हैं मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस का जिसमें कोडोमिनेंस यूज हो रही हो. So monohybrid inheritance, I'm going to write the name of the topic. Monohybrid inheritance involving codominance. The more you practice के probabilities कैसे कैसे कहाँ से you can write it down, the more you're gonna get better as at these genetic questions. Okay, again monohybrid inheritance क्या होती है? एक जीन की inheritance. Codominance क्या होती है? कि heterozygote में दोनों alleles contribute 50-50% करते हैं. Example, I have a gene. Let's use the same one that controls body color. Let's use the same characteristic. I'm not going to change it again and again. So let's say you have a gene that controls the body color. अब इस जीन के तीन एलील्स हैं. This gene has three alleles. The first allele is written as इस तरीके से you have F and then at the power of F you write A. You have another allele called F. At the power of F, you write B. And then you have another allele which is called F. Like, can you see the first two are written in capital and the third one is written in a small form. This is done on purpose. क्योंकि the reason अब हम normally जैसे alleles लिखते हैं वो कैसे होता है? Either capital or small. This is a different way of writing the alleles. You have the letter and then you have the allele written on top of it. जब इस तरीके से एलील लिखे होंगे you will assume कि this is an example of codominance. अब मैं ये नहीं कह रहा कि if you see these types of alleles मतलब इस तरीके से लिखे हुए क्वेश्चन में 100% it's a codominance. नहीं, this is just a hint. It's not 100% true unless the question tells you this is codominance. जो कि यहाँ पे I'm gonna write down. You see the topic name? कोडोमिनेंस यहाँ पे हो रहा है. तो मैं ये नहीं कह रहा कि कोडोमिनेंस यहाँ पे यूज हो रहा है just by looking at the way the alleles are written. It's in the question और उसी से मैंने प्रेडिक्ट किया कि कोडोमिनेंस है. अब ये पहला वाला जो एलील है इसका ट्रेट है ब्लू. दूसरे वाला जो डोमिनेंट एलील है इसका ट्रेट है रेड. So now you see you have two dominant alleles, blue and red, and you have one recessive allele which is orange in color. नॉर्मली हमारे पास एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव होता है लेकिन क्योंकि को डोमिनेंस है आई हैव टू डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव. दिस मींस अब क्वेश्चन यहां तक भी बता रहा है कि इफ एन ऑर्गेनिज्म दिस एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. इफ एन ऑर्गेनिज्म्स genotype is FA, FB, the phenotype is going to be purple. क्वेश्चन ने हमें ये क्यों बताया? इस चीज की क्या जरूरत थी? इस चीज की जरूरत थी हमें ये तो पता ही नहीं है कि जब कोडोमिनेंस हम यूज करेंगे तो फिनोटाइप क्या होगा. व्हाट्स गोना बी द थर्ड वेरिएशन? दिस इज गोना बी द थर्ड न्यू वेरिएशन कि पर्पल कलर बन जाएगा व्हिच इज नॉट एनीवेयर. सो यू नीड टू नो दिस. ओके, अब मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ. आई हैव वन पेरेंट व्हिच इज रेड इन कलर. सो यहाँ पे फिनो लेट मी राइट द मेल पेरेंट and then on the right side we have the female parent.
The male parent is red in color, and the female parent is blue in color. मेल पेरेंट का जो जीनोटाइप है दैट इज एफ बी एंड एफ. फीमेल पेरेंट का जो जीनोटाइप है दैट इज एफ ए and F. Now, look at the genotype for the male parent. Which allele do you think is going to get expressed? Is it this one or is it this one? The F, capital F1. The capital F1, the B1, right? ये capital F और B क्या करता है? This the dominant trait is red. Now, if you pair up a dominant allele with a recessive allele, which one do you think is going to get expressed? As you said, the capital F, which is red. इसीलिए male parent is red in color. Let's try this again. Female parent का genotype है capital FA and small f. Again, you have a dominant allele paired up with a recessive allele. तो यहाँ पे it's the dominant one जो express होगा. इसीलिए the female parent has blue in color. Okay. Now I want you to write down the gametes जो यहाँ पे आ सकते हैं. Then offspring का genotype and phenotype क्या होगा? So just try it out. Sir, you're saying something because I can't hear anything. Yeah, so I just gave you time to just try this out, this question right here. So just tell me the gametes for the male parent, the gametes for the female, and then what's going to be the offspring genotype and the phenotype. So just try this question out. Can I see the key? Yeah. So it's the same one as before. ये इस तरीके वाली. Oh, okay. Yeah, I'm done. Okay, so can you tell me what the answer is? Okay, so like, so for the genotypes, there's FA, FB, Okay. there's FAF, and there's FBF, and then there's FF.
Okay, so could you just repeat this again? I was trying to listen to all of these together. Okay. Okay, so So like there's first the gametes. First the gamete. oh okay, so there's FB and there's F Okay. and then there's FA Right. and then F. Okay. And for the genotypes, there's FA, FB, Okay. and there's FAF, Right. FBF, and FF. So I assume you did this using the Punnett cross, right? Yeah, I did. Right. Big precise. So all of these are correct. Even the gametes are correct. Now could you tell me the phenotypes? Okay, for the first one, it's purple, Okay. and the second one, it's blue, Blue, correct. and the third one, it's red, All right. and the last one. Mm-hmm. ये homozygous recessive है. So what's the recessive trait? Could you show the key again? Like, Yeah. oh yeah, it's orange. Orange. बिल्कुल सही. So if I ask you what's the ratio for all of these colors, so what would you tell? Okay, if I ask you what's the ratio of purple to One red is to to one is to blue? one is to one again. बिल्कुल सही. All of these colors have a 1 in 4 chance of appearing. So every single color, if they ask you the possibility or the percentage, it's going to be 25% each time. Right. So we're done with the topic of monohybrid inheritance, normal wala bhi, codominance wala bhi, Punnett cross wala bhi, crisscross method wala bhi. We're done with all of that. Now the next topic is going to be test cross, but I want to explain it in detail, and I don't think we're going to have time for that today. So हम आज इसको यहीं तक रखते हैं. Any questions you have until here, feel free to ask. No, it's clear. Okay, so I'm just gonna take this chapter just really really slow ताकि because this chapter में बहुत सारे concepts अलग-अलग involved हैं which are so easy to just mix them together, and we have a ton of time before we complete the syllabus, so I'm just gonna take this really slow. Okay, so could you give a summary of what we did today? Right, so basically we discussed about codominance and monohybrid inheritance. Mm-hmm. And in monohybrid inheritance, we basically learned that it's basically the inheritance of one gene. And basically, we practice the test crosses. And like for example, if we are crossing a homozygous dominant and a homozygous recessive, we're getting all of the offspring as heterozygous. And then we learned about the codominance, and in over here is like basically when both of the alleles express themselves in a heterozygous genotype. And so there are like more than two possible phenotypes. And like for example, we did this example, and over here like there's a completely different phenotypical characteristic than the two Mm-hmm. possibilities. Okay, so एक और चीज, I assume in school you would have learned some tricks, right? कि अगर दोनों homozygous होंगे तो result heterozygous आएगा, tricks इस तरीके से. Yeah, I did. Okay, so what I always just tell whoever the students जिनको मैं पढ़ाता हूँ कि do not really rely on these tricks. The thing is, ये tricks obviously 100% सही हैं, लेकिन इन tricks का एक drawback है. और वो drawback ये है कि हमें इनको याद रखना पड़ता है. A2 का syllabus, you know, it's insane कि इतनी चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती हैं. Therefore, ये extra चीज़ है जो एक याद रखनी है. Now, could you, for example, tell me one of the tricks that you have learned? Okay, I'm just going to write it down. Yeah, so basically there's one we've learned in like Mhm. we've learned about the F1 generation and the F2 generation. And Mm. that the F1 generation is basically the all the heterozygous, and like it's formed when there's a cross between a homozygous dominant and a homozygous recessive. Okay. And Now, but just pause right there. Just pause right there for 1 second. You said that one of the parents is homozygous dominant and दूसरा homozygous recessive होगा, so the result is going to be heterozygous. That's the trick, right? yeah.
नाउ अज्यूम कि जैसे मैं हूँ, मैंने आज तक ये कोई ट्रिक्स याद नहीं की हुई। सो द क्वेश्चन व्हिच यू गिव मी, होमोजाइगस डोमिनेंट, लेट्स टेक कैपिटल बी, एंड होमोजाइगस रिसेसिव, लेट्स टेक स्मॉल बी। अब अगर मुझे ये ट्रिक नहीं पता, एग्जाम के अंदर ऑल आई एम गोना से इज देयर इज गोना बी टू गैमेट्स। दिस इसके लिए तो सिर्फ कैपिटल बी है, इसके लिए स्मॉल बी है। आई एम जस्ट गोना क्रॉस देम टुगेदर एंड दिस इज गोना बी 100% चांस ऑफ हेटेरोजाइगस। How much time did this take? 10 seconds, 15 seconds, correct? Yeah. Nothing more than that, right? So this is what I'm trying to explain. कि look at the reward ratio कि इन चीजों को याद रखने से, now suppose if you just rely on this and you get this wrong, मतलब you remember it by mixing it with some other trick, you get it wrong. But now imagine if you don't remember it, if you just do it on the spot in the exam. तो बस ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, बट अगेन इफ यू एबल टू रिमेंबर इट परफेक्टली एवरी सिंगल ट्रिक, देन you can use it. But if you're not, then it's gonna take no less than 30 seconds to just be able to find out the answer on the spot in the exam. Just that. Okay, so any questions you have from this? Any confusions kuch bhi? No, it's clear. Okay, so we'll keep it till here और हम इसको इंशाल्लाह Tuesday को continue करेंगे. Right. Thank you. Allah Hafiz. Thank you. I love this.